last time I have told you about case 1 when one surface is fixed. And in case 1 we have scenario 1 where the movable object is stationary or just does not move or just moves. And, these two statements being equivalent. Right? And I told you about, we discussed about F applied, how to calculate F applied in various situations. In most situations, we saw 4 out of 6. We saw that F applied is ambiguous. It will depend on the values of forces. If all the forces are given, then there is no problem. Then there is no ambiguity. Okay, so there is a scenario 2 and there is a scenario 3. So here, movable object is not stationary and F applied is not equal to 0. Okay. There is a scenario 3 where the movable object is not stationary and F applied is equal to 0. And so we'll discuss these cases now. जो 6 क्वेश्चंस आपको मैंने लास्ट टाइम दिए थे उसमें से हमने 2 पे वर्क किया था. वी वर्कड ऑन 2, राइट? We found minimum force. We found force required to just move the object. Okay? One thing which we did not calculate, which we must do so before we move ahead, is find the minimum force required to move the block. So this is the block and this is find the minimum force required to move the block. I'll give you 5 minutes. Quickly solve this. यार मैन इतना सिंपल आंसर होता तो मैं बोलता ही नहीं ना, फिर मैं क्यों 5 मिनट दे रहा होता. The answer is not mu mg. Okay, the answer is not mu mg.
Yes, of course you have to, na? नहीं, 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 नहीं भाई, क्या हो गया तुम लोग को? सेकंड क्लास नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। Assume that force is applied at an angle of theta. So now, if I were to draw the FBD would be the same जो मेरे को पहले था। हाँ तो प्रतीक्षा अगला स्टेप करो ना, मैंने मिनिमम फोर्स पूछा है ना। मिनिमम फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा इसके आगे? देखो जो एक्सप्रेशन लिखा है, लुक एट द एक्सप्रेशन। दिस एंगल इज थीटा। हाँ गुड, यस यस महक, यस। दिस एफ cos थीटा, एफ sin थीटा। फ्रिक्शन इधर आना चाहिए। बहुत बढ़िया आ रहे हैं, गुड बॉय, यस यस। एक शायद उसमें रूट भी आएगा, देख लेना। So we have along the y-axis, we have n plus f sin theta is equal to mg, and along the x-axis, हाँ प्रतीक्षा बिल्कुल सही, we have f cos theta is equal to mu n. Okay, and again I want to really emphasize that f is mu n
because the block just moves. So from here we get F is equal to, we've already done this, mu mg upon cosine theta plus mu sine theta. So for this F to be minimum, right? For this F to be minimum, the denominator should be maximum, right? And what is the maximum value of cos theta plus mu sin theta? Cos theta plus mu sin theta का maximum value क्या है? What is the maximum value of cosine theta plus mu sin? Yes, it is root 1 plus mu square. Right. So we get, therefore, minimum F is equal to mu mg upon root of 1 plus mu square. I can also ask, okay, at what angle should this force be applied? Okay, I can also ask, क्योंकि मेरे को मिनिमम फोर्स निकालना था ना, खुशी मिनिमम फोर्स बोला हुआ है ना, तो मिनिमम फोर्स so that the block just moves, right? Minimum force so that the block just moves. तो जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जब मैं ये टेढ़ा फोर्स लगाऊंगा तो मेरे फोर्स का एक कंपोनेंट एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन को कम करेगा, और अगर नॉर्मल रिएक्शन कम होएगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कम होएगी। तो जैसे जैसे मैं टेढ़े करते जाऊंगा फोर्स को, वैसे वैसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कम होती जाएगी, लेकिन साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स भी कम होते जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा रहेगा जहां पे ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं इसका मैग्नीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो n को जस्ट इतना कम करेगा कि हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इस ब्लॉक को आगे खींच ले जाए। ओके, you have to think in more dimensions. ऐसा नहीं सोचना है कि सीधा फोर्स लगा, मेरे को मिनिमम फोर्स लगाना है, वो मिनिमम फोर्स मैं कैसे भी लगाऊं, राइट? नहीं, थीटा क्लोज टू 90 अगर रहेगा शौनक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। नहीं, साइन इनवर्स म्यू नहीं होएगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। तो ये cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मैक्सिमम कब होएगा? So what we can do is d by d theta of cos theta plus mu sin theta is equal to 0. Good, yes. नहीं शिवेंद्र, गलत किया। Minus sin theta plus mu cosine theta is equal to 0, and we get tan theta is equal to mu. So at what angle should this be applied? Theta is equal to tan inverse of mu. इतने एंगल पे ये फोर्स अप्लाई करना है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होना चाहिए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होना चाहिए, और इतने एंगल पे होना चाहिए, राइट? अगेन आई हैव told you before, I am telling you now again, and I will keep on telling you in the future, जो आपने क्लास 9 10th में पढ़ा है, अब हम उससे थोड़ा और ऊपर चल। So this is the minimum value of force required to move a block, right? अब ये क्वेश्चन मैं आपको आपके सामने फिर से कैसे दूंगा? मैं आपको
uh, in future I will teach you the mechanism of electrical forces. Okay, and I will ask you find the electrical phenomena which will be responsible such that the block just moves. तो अब उसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी इसके ऊपर जो मूव करने के लिए ब्लॉक को दैट शुड बी इक्वल टू दिस थिंग दैट शुड बी इक्वल टू दिस थिंग ये जो अभी हमने निकाला है दैट शुड बी इक्वल टू दिस थिंग. मैं आपको फ्यूचर में बोलूंगा कि एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही है करंट कैरिंग वायर पे. आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग वायर पे लगती है. 12th में वी विल डिस्कस कि कितनी फोर्स लगती है, क्या डायरेक्शन होता है उस फोर्स का. और मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, मैंने ये ब्लॉक में एक वायर डाल दिया, उसमें करंट है, अब आप बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि ये ब्लॉक मूव कर जाए. मिनिमम कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि ये ब्लॉक मूव कर जाए. तो उस टाइम पे यू विल हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक. प्लीज डोंट रिमेंबर इट एज म्यू एम जी. इट इज इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर. राइट. ओके, आगे बढ़ रहे हैं. So before I move on to the remaining four questions, right? Those remaining four questions are very important, and I told you to leave some space. अगर आपने स्पेस नहीं भी छोड़ा है तो डज नॉट मैटर, उसमें अभी बहुत काम हमें करना बाकी है. तो बिफोर आई go on to those 6 questions which are basically scenario 1, I want to discuss scenario 2, right, which is actually very easy, which is which is when the body will start to move under the influence of forces. So, for when motion starts and F applied is not equal to 0, that means that when you draw the FBD, you are getting some force parallel to the interacting surfaces. So when motion starts and F applied is not equal to 0, which I have classified or which I have called scenario 2 of case 1, I need to tell you the magnitude of the friction and I need to tell you the direction of friction. So the magnitude of friction in this case will be fixed. The magnitude of friction will be equal to mu k into m, where mu k is the coefficient of static friction. Okay, and if mu k is not given separately, then you will assume that mu k is equal to mu s is equal to. And generally, almost in all cases, oh, sorry. और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बाकी सब लोग सो रहे हैं. मैं भी बिना किसी की तरह ऑन करवा दूंगा कैमरा ऑन. So if mu k is not given, then mu k is equal to mu s is equal to mu, and generally mu k is less than mu s. अगर mu k given है तो it will be less than mu s. Now the direction of this kinetic friction is थोड़ा सा weird. मतलब weird क्या है? It is actually very obvious, but so the direction of this kinetic friction is opposite to the velocity
of the object irrespective of the direction of F applied. तो F applied का डायरेक्शन अब यहाँ पे रोल नहीं प्ले करेगा, कुछ क्वेश्चंस में तो प्ले करेगा, यहाँ पे F applied के ही डायरेक्शन में वेलोसिटी है, लेकिन अगर आपको मोशन होता दिखाई दे रहा है और आपको F applied भी दिखाई दे रहा है, तो जो फ्रिक्शन होएगा दैट विल बी ऑपोजिट टू the velocity of the object. So, for example, if I have an object like this, it has a velocity like this, and I am applying a force like this, then the friction on this object will be in this direction, will be in the same direction as the F applied, opposite to the velocity of the object. Okay? If I were to draw a graph between the friction force and the applied force, तो ये एक्सिस पे we have F applied, and ये एक्सिस पे we have the force of friction. So the graph would be a straight line at an angle of 45 degrees, because at any point, as long as F applied is less than mu n, F applied will be equal to. So if this is 3 Newton, for example, this will be 3 Newton. Up till the point where this is equal to mu s n, यहाँ तक ये ग्रो करेगा, और अगर F applied इससे ज्यादा हुआ तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, और जब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कांस्टेंट हो जाएगी, एंड दिस वैल्यू विल बी म्यू के एन. ऑफ कोर्स इफ म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के, तो ऊपर ही स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. दिस इज हाउ kinetic friction will behave. Okay, so let's do a couple of questions on this kinetic friction. It's actually not very difficult, it's very easy. So I have a 6 kg block, and I have a 4 kg block, which are connected to each other by strings. The value of mu here is 0.5, and the value of mu here is 0.4. Okay, so you have to fill the table, and the table is like this. So I will give you the value of F, and you have to find the value of F1, F2, E, A, हाँ इतना ही. So let me give you the values of F.
Now, what is F1 and what is F2? So, F1 is the friction force here, and F2 is the friction force here, right? And tension, of course, is the tension in the string. Chalo, so please fill up this table. क्वेश्चन तो है सामने अनीश.
हो गया भाई, भर दिया टेबल। ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। शिवेन ने मेरे को बहुत अच्छा आंसर दिया, गुड। नहीं बच्चा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, F1 मैक्स निकालेंगे फिर। F1 max is equal to mu1 n1, and in this case n1 happens to be 4g। okay? प्रीवियस एग्जांपल्स में रिमेंबर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि n की वैल्यू mg रहेगी। So mu1 n1 will give you 0.5 into m into g, that is 40, that is 20 newton। और यहाँ पे हम F2 max निकाल देते हैं, which also happens to be mu2 n2, and n2 happens to be mg. So this will be 0.4 into 60, which is equal to 24 newtons। तो जब तक ये वाली फोर्स 20 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो जाएगी, which is the maximum friction here, जब तक ये फोर्स 20 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो जाएगी, यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, राइट? ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक भारी बक्सा है, ओके, ह्यूज बिग बक्सा है, और आप उसके एक साइड पे you are sitting on the floor with that box as your backrest, and on the other side somebody is pushing that box। okay, I don't mean kicking the box, I mean pushing the box with a particular force। जब तक वो फोर्स म्यू एन से ज्यादा नहीं हो जाएगी, तब तक आपको दूसरे साइड में पता नहीं चलेगा कि वो बंदा वहां पे उसको पुश कर रहा है। जब तक ये वाली फोर्स 20 न्यूटन को एक्सीड नहीं करेगी, तब तक यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। So this means that F1 will match the applied force, tension will be 0, F2 will be 0, acceleration will be 0। जब ये फोर्स 20 न्यूटन को एक्सीड कर जाएगी, तब टेंशन प्ले में आ जाएगी। अब इसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स रहेगी वो F माइनस टी रहेगी, ओके? और इसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है वो टी रहेगा। तो जब तक ये टी 24 से ज्यादा नहीं हो जाता, तब तक ये ब्लॉक नहीं मूव करेगा, और ये ब्लॉक जब तक नहीं मूव करेगा, तब तक ये ब्लॉक भी नहीं मूव करेगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ स्ट्रिंग। So this means that when this force becomes 25, the friction will reach its maximum value here, 20। okay? तो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 25 है, लेकिन फ्रिक्शन यहाँ पे 20 है, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया है। 25 20 तो मूव कर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेंशन भी है, और ये टेंशन इस फोर्स के ऑपोजिट है। सो हियर द टेंशन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 5, एंड अगर यहाँ पे टेंशन 5 है, the tension here is 5 Newton, tension here is 5 Newton, and this friction will match this tension। So here we will have 5, acceleration will still be 0। acceleration तब तक 0 रहेगा जब तक ये जो फोर्स है ये प्लस ये के ऊपर नहीं चली जाती। दैट मीन्स जब तक ये 44 के ऊपर नहीं जाती है,
So until F reaches 44 Newton, the blocks are not going to move. चलो 35 कर देते हैं भाई, ये 35 हो गया, ये 35 हो गया, फ्रिक्शन मैक्सिमम है, तो यहाँ पे जो टेंशन है दैट विल बी इक्वल टू, ये तो 20 हो जाएगा, और टेंशन विल बी इक्वल टू 15, F2 will be equal to 15, acceleration will be equal to 0. अब जब फोर्स 55 हो गया, 44 से ज्यादा हो गया, अब ये मूव करने लगे, they will start to move now. And since I have only given one value of mu, we will assume that this is also equal to mu k. Right? Since both these objects will have the same acceleration, I can consider them as one system. And I want to write this here. Since both have same acceleration, we can take them as a single system. Right? So let's take them as a single system. कितना फोर्स लगाया मैंने? 55. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 44. ओके, तो ये ब्लॉक के ऊपर हमारे पास ये 10 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर इधर जो फोर्स लगी है वो 55 है, और इधर जो फोर्स लगी है वो 44 है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल फोर्स, जो नेट फोर्स जो इस ब्लॉक के ऊपर लगी है, दैट इज 11 न्यूटन, एंड दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. So acceleration should be equal to 1.1. Let's fill up the values. F1 अपने maximum value पे, F2 अपने maximum value पे, acceleration की value 1.1. And now I can easily find the value of tension, because for this 6 kg block, right hand side में tension लगा है, यहाँ पे friction लगा है, so T minus F is equal to 6a. T is equal to F plus 6a. In this case, F2 plus 6a. और चूंकि मोशन हो रहा है, इसलिए ये गिवन है कि F1 F2 की वैल्यू तो मैक्सिमम होनी है. So I will get 6a plus F2 max. That means 6.6 plus 24, which is equal to 30.6. This will be the value of tension. ठीक है? ये आया सबको समझ में? इसमें कोई चीज जो नहीं समझ में आ रही है? Anybody having any doubt on this? Okay. हाँ पूछो भाई, हार्दिक, आस्क, अनम्यूट करो. हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो या चैट पे पूछ सकते हो भाई, जैसे भी पूछना. टेंशन निकालने पे माइनस क्यों नहीं किया? क्या माइनस करना था? टेंशन निकालने क्या माइनस करना है हार्दिक? नहीं नहीं, ये रिलेशन देखो ना यहाँ पे, आप ये वाला रिलेशन देखो ना. टेंशन की क्या वैल्यू है यहाँ से? T is equal to 6a plus F2 है ना.
राइट। ओके, चलो आगे बढ़ रहे हैं फिर। Mu k is less than mu s, Shivan, because जब एक बॉडी मूव कर रही होती है ना, आई थिंक वी डिस्कस दिस लास्ट टाइम, जब एक बॉडी मूव कर रही होती है तो उसको इंटरमेशिंग का टाइम नहीं मिलता है। अगर आपने एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करा दिया, देन आपको इंटरमेशिंग का टाइम नहीं मिलेगा। And if you want a practical this thing, then if you have to push a heavy box on the floor, you will find that getting it to move is very painful. But once it begins to move, then there is no problem. Okay. A very crude example would be, if you remember, अगर रेलवे स्टेशन पे किसी ने वो कैरेजेस होते हैं जिसमें वो these guys, they fill it up with luggage and they push it, although वहाँ पे रोलिंग हो रहा है और उसके कॉन्सेप्ट थोड़े अलग होते हैं, बट स्टिल जब वो पुश करते हैं ना, तो क्या है कि दे डोंट लाइक टू स्टॉप, चिल्लाना शुरू करेंगे इफ यू आर इन देयर वे, भैया हट जाओ रास्ते से। They don't like to stop because they know that once you stop, then to get it moving again is very difficult. Intermeshing का टाइम ही नहीं मिल रहा। There is no time for intermeshing between surfaces. That is why mu k is less than mu s. Having said this, there is a phenomena which is known as cold welding. तो एक अगर आप एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर मूव कराओगे, तो ये पॉसिबल है दैट द हीट जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन may actually begin to weld the two metals together. So in that case, you will find that mu k becomes greater than mu s. That is one of the cases. But generally, mu k is less than mu s. Okay, so I want to now come back to those 4 questions जो वहाँ पे छोड़ दिए थे. Right? Scenario 2 में very simple. Let me just case 1. Scenario 2, draw FBD, then कोल्ड वेल्डिंग का मतलब कि एक बार मुझे फिर से विकिपीडिया देखना पड़ेगा, लेकिन कोल्ड वेल्डिंग का मतलब शायद यहाँ तक मुझे याद है उसमें होता है कि दैट यू आर नॉट सप्लाइंग एक्सटर्नल हीट। ड्रॉ एफबीडी, उसके बाद से फाइंड एफ अप्लाइड, उसके बाद से ड्रॉ फ्रिक्शन ऑन एफबीडी, उसके बाद से फाइंड एन, और उसके बाद से फाइंड म्यू एन, अप्लाई second law, right? Because we know that here the friction will always be mu n. Okay. Chalo, so I want to get back to those 4 questions before we go on to the next section. So first, I want to talk about
this guy. We are back to scenario 1 now. Scenario 2 मैंने discuss कर लिया. There is nothing apart from what I have discussed. Right? Kinetic friction आ जाएगा. अगर kinetic friction नहीं दिया है तो static friction को ही kinetic friction ले लेंगे. और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये गारंटीड है दैट कौन अनम्यूट कर रहा है पार्थ सो इट इज गारंटीड दैट friction will have a magnitude of mu n. Okay? So apparently scenario 1 is more interesting because वहाँ पे friction की values जो है vary करती है. Mu. Find the range of values of f. Let's start with a simpler question. Find the minimum value of mu for which the block just moves. If mu is less than this, then find acceleration of blocks. So this is an easy question. हाँ बिल्कुल सही प्रतीक्षा. देखो जस्ट मूव जहां लिख दिया ना वहां पे एक ही काम करना है. फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कर देनी है और एक्सेलरेशन को 0 कर देना. यस अब ये काम आप अपनी कॉपी के साथ, मैं जनरली क्लास में ये 0 to infinity शौनक ज्यादा मैथ्स झाड़ेगा ना. मेरे को मैथ्स ज्यादा नहीं आती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मैथ्स सिखाएगा. Well, you can do this experiment at home. All you have to do is take your copy and put a block on it, maybe your pencil box, maybe an eraser, and just increase the angle. हाँ बिल्कुल सही प्रतीक्षा. Increase the angle
and at a particular angle you will find that the block will slide down the inclined plane, which is your copy, which is your register. That actually is the way to find mu for two surfaces. You can accurately find mu for the surfaces of whatever you have chosen as the block and your copy, uh, just by measuring the angle at which the sliding begins. So this is very easy. I draw the FBD. Forces acting on it are mg, normal reaction. ये surface है. I will draw the axis. ये angle theta है. So this is mg cosine theta. This is mg sine theta. So of course F applied is equal to mg sine theta, right? तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो यहाँ आ जाएगा F, और n की वैल्यू हो जाएगी mg कोसाइन थीटा. सो अगर हमें बोला गया है जस्ट मूव्स, तो इसका मतलब mg साइन थीटा is equal to mu mg cosine theta, right? So tan theta is equal to mu, mu is equal to and if mu is less than this, if mu is less than this, then mg sine theta minus mu mg cos theta will be equal to ma, because in this case block will slide down. M cancels out and we will get A is equal to g sine theta minus mu g cos theta. Now I hate to say this, I don't like saying this, but this is something that you have to remember. Okay? Very easy to remember, actually, it's not very difficult. Okay. Next question. ये आ गया सबको समझ में? क्या किया है मैंने? सबको समझ में आया? Anybody not understanding? Okay. Next question. Find the range of values of f for which the block will remain stationary on the inclined plane. The inclined plane itself fixed, and given that mu is less than tan theta. Please don't be confused with this question. Okay? Don't be confused with this question. Go back, जो हमने last time discuss किया था. Why was there an ambiguity in the first place? Right? There was an ambiguity, right? The ambiguity was that you did not know which force is bigger.
and here they have used the word range, राइट। इसका मतलब कि आप एक बार अज्यूम करोगे कि वो बड़ा है, एक फोर्स बड़ी है, एक बार अज्यूम करोगे कि दूसरी फोर्स बड़ी है। रिमेन स्टेशनरी, जस्ट मूव्स, जस्ट डज नॉट मूव। रिमेन स्टेशनरी का एक्सट्रीम हमें चाहिए, जो भी कंडीशन। जस्ट मूव, जस्ट डज नॉट मूव, ये सारे तीनों चीज, हाँ, ए इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हो गया, और फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो। चलो करो इसको, आई गिव यू 5 मिनट्स। नहीं बे शौनक, अंधेरे में तीर मत मार, अभी थीटा फिक्स्ड है। नहीं, जीरो रहेगा तो शिवेन आंसर गलत हो गया ना, क्योंकि म्यू लेस देन tan थीटा है। अगर मैं फोर्स वहां पे जीरो कर दूंगा, अगर मैं फोर्स जीरो कर दूंगा तो ये ब्लॉक तो नीचे स्लाइड डाउन कर जाएगा ना, क्योंकि हमने देखा कि म्यू अगर tan थीटा के बराबर है तो ब्लॉक जस्ट रेस्ट पे रहता है। अगर म्यू ग्रेटर देन tan थीटा होएगा तो वो ब्लॉक स्लाइड डाउन ही नहीं करेगा। जीरो पर ओपन ब्रैकेट, फिर तुम लोग यार मैथ्स पर।
Very good, Pratiksha. Yes. So again, we simply draw the FBD without friction, G and F. हाँ तो थीटा गिवन है भाई, हार्दिक दिखाई दे रहा है ना, थीटा क्वेश्चन में गिवन है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ हाँ बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हो गया एम जी साइन थीटा, एम जी कोसाइन थीटा, ये हो गया एम जी साइन। Okay, now I want to talk about F applied. Okay, please see now. Please see what I'm doing. I want to talk about F applied. हाँ, F applied के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? F applied के बारे में हम ये बोल सकते हैं that it is either F minus mg sin theta or it is mg sin theta minus F. तो ये वाला केस कब ट्रू होएगा और ये वाला केस कब ट्रू होगा? Right, I'm going to be asking a series of questions. ये वाला केस कब ट्रू होएगा और ये वाला केस कब? When will F applied be this? When will F applied be this? F applied will be this if what is true, and F applied will be this if what is true. So here F applied will be this if F is greater than mg sin theta, and if F is less than mg sin theta, then this is F applied. Now, if F is less than mg sin theta, then this block will have a tendency to go where? mg sin theta बड़ा है, F कम है. mg sin theta बड़ा है और F कम है. Then this block will have a tendency to go where? So in this case, the block will have a tendency to go down the incline. And in this case, the block will have a tendency to go up the incline, right? Okay. ठीक है ना? So in this case, what will be the direction of friction force on the block? It has a tendency to go down the incline. So the direction of friction force will be where? So in this case, the direction of friction, remember it is opposite to F applied, right? It will be like this. And in this case, the direction of friction will be like this, down the incline. अगर मैंने F को 0 कर दिया, अगर मैंने F को 0 कर दिया तो क्या हुआ? अगर मैंने F को 0 कर दिया तो केवल mg sin थीटा एक्ट कर रहा है डाउन द इंक्लाइन,
only mg sine theta is acting down the incline, and mg sine theta is definitely greater than the friction force acting upwards, because I have told you that mu is less than tan theta. So in this case the block will slide down. अब जब मैंने फोर्स ये लगाया F, ठीक है ना, तो मान लीजिए मैंने फोर्स लगाया 0.0000001 न्यूटन, स्टिल द ब्लॉक विल मूव डाउन. अब मैंने ये फोर्स को बढ़ाया 0.00002 न्यूटन कर दिया, तब भी ब्लॉक नीचे आ रहा है. अब मैं ये फोर्स को बढ़ाते जा रहा हूं, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम I find that I am applying just enough force so that the block does not move down. Just enough force so that the block just does not move down. Is this understood what I am trying to say? अगर मैंने कैपिटल F की वैल्यू 0 रखी है तो ब्लॉक डेफिनेटली स्लाइड डाउन कर जाएगा. अगर मैंने F की कोई वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू रखी है बट वेरी स्मॉल, तब भी ब्लॉक स्लाइड डाउन कर जाएगा. और अगर ये मैं F की वैल्यू इंक्रीज करते जाऊंगा तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम I would have applied enough force just to keep the block from sliding. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम सोचना चाहते हैं तो gravity is enough to break the peaks and valleys. But if I apply a force from down, from bottom towards up the incline, then maybe I can apply a force such that the peaks and valleys, they are just not breaking. So in this case, friction will be in this direction and its value will be mu n. Right? If mg sine theta minus f, if f applied is equal to mg sine theta minus f. So in this case, I will get mg sine theta is equal to mu n plus f. This is along the x-axis, and along the y-axis, I will get n is equal to mg cos theta. And if I put in the value of n, I get the minimum force required to hold this block, and that will be equal to mg sine theta minus mu mg cos theta. Right? Okay. अब अगर मैं इस फोर्स को और इंक्रीज करूंगा, तो क्या होएगा? कैन यू टेल मी क्या होएगा? अगर मैं इस फोर्स को इस मिनिमम वैल्यू से और आगे कर दूंगा, इस मिनिमम वैल्यू से कम करूंगा, तब तो ये स्लाइड डाउन कर जाएगा. लेकिन अगर इस मिनिमम वैल्यू से और ज्यादा कर दूंगा इस फोर्स को, तो क्या होएगा? व्हाट विल हैपन? कैन एनीबॉडी टेल मी? No, it will not go up. No, that's the whole point. The block will not go up. If I increase the force from this minimum value, the block will not go up. What will happen? If I increase F from this value, the friction will decrease, and this plus this will be equal to this. Okay, I'm changing the slide. So here I want to write down, for F greater than F minimum, we will have mg, we will have n, we will have F. Our axis will be like this. This angle will be theta. Here you will have mg cosine theta. Here you will have mg sine theta. And here you will have friction.
and f plus f will be equal to mg sine theta, f being less than mu n. If I keep on increasing f, if I keep on increasing f, what will happen? If I keep on increasing f, what will happen? हाँ बोलो खुशी. सर वो आपने सेकंड केस क्यों लिया मुझे समझ नहीं आता. सेकेंड केस कौन सा? आपने वो एम जी साइन थीटा माइनस एफ लिया. ऐसे ही. हाँ मतलब ऐसे ही लिया, मतलब कोई खासा वो रीजन नहीं था, मतलब इट वाज जस्ट अ प्रेफरेंस. आई कुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम द अदर केस आल्सो. हाँ भाई, व्हाई विल इट नॉट गो अप, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग को होएगा, है ना. तो आप ऐसा करो, अपने घर में ना अपनी कॉपी लो, उसको ऐसे रखो और अपनी कॉपी के ऊपर एक ब्लॉक रखो ऐसे, राइट. नाउ व्हाट यू डू इज you apply a force like this with your fingers. You apply a force like this. When you apply a force like this, try to arrive at the force where when you decrease that force, the thing definitely slides down. Hold the object there and now apply a slightly bigger force, and you will see that the object does not move down, because you see what is happening is the forces acting on the object are mg sine theta is trying to take it down, force that you have applied is trying to take it up, and friction is acting in the upward direction. But this guy is a self-adjusting force. This is a self-adjusting force. And its value, magnitude, it varies from 0 to mu n. तो जब आप इसको इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होएगा, such that f plus f will balance out this mg sine theta. And you can keep on increasing this f, and this f will keep on decreasing until what happens? Until what happens? F becomes 0. Yes, friction becomes 0. Absolutely. Friction becomes 0. फ्रिक्शन 0 कब होता है? ये क्या हो रहा है? मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, मैं एग्जैक्टली वही चीज बता रहा हूं जो मैंने आपको पहले बताई थी. अगर आप यहाँ पे F applied निकालेंगे तो here the F applied is equal to mg sine theta minus F. And I told you that the force of friction is equal to F applied if the magnitude of F applied is less than mu n, and the force of friction is equal to mu n if the magnitude of F applied, okay, if the magnitude of F applied is greater or equal to mu n. तो अगर F applied की वैल्यू mg sin theta minus F minimum है, तो F applied की वैल्यू mu n के बराबर है और इसलिए फ्रिक्शन mu n. लेकिन जैसे ही मैं F को इंक्रीज करूंगा, mg sin theta minus F की वैल्यू कम हो जाएगी, F applied की वैल्यू देयरफॉर कम हो जाएगी, mu n से भी कम हो जाएगी.
तो फ्रिक्शन फोर्स एफ अप्लाइड को मैच करके रह जाएगा. So this red arrow is actually matching this blue arrow minus this blue arrow. And if I keep on increasing F, then at some point of time F applied itself will become 0. And when F applied becomes 0, the friction becomes 0. आप अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए, आपके ऊपर कोई फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है क्योंकि कोई F applied नहीं. कोई आके धक्का देगा तो आपके ऊपर फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा. So I can add this here. For F is equal to mg sin theta, F applied will be equal to 0, F will be equal to 0. ये आया समझ में? अभी आ रहा है समझ में? Are you understanding this? Everybody is understanding this. What would happen if I increase F now? अगर मैं F को और इंक्रीज करूंगा तो क्या हो जाए? अगर मैं F को और इंक्रीज करूंगा तो क्या हो जाए? नहीं भाई शौनक, अभी ऊपर नहीं जाएगा. सब लोग ऊपर ही भेज रहे हैं उसको. जीने दो थोड़ा सा उसको. यहाँ पे अगर F और बड़ा कर दिया मैंने तो क्या हो जाएगा? then F applied will become this. अगर F को mg sin थीटा के बराबर कर दिया तो F applied 0 हो गया. लेकिन अगर F को उससे ज्यादा कर दिया तो F applied ये हो गया. F applied की डायरेक्शन ही फ्लिप हो गई. और अगर F applied की डायरेक्शन फ्लिप हो गई तो फ्रिक्शन की भी डायरेक्शन फ्लिप हो गई. So when F is greater than mg sin theta but less than F maximum, then what will happen? इसके ऊपर mg इधर ही लग रहा है, F इधर ही लग रहा है, n इधर ही लग रहा है, और जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो सेम है. mg cos थीटा इधर लग रहा है, mg sin थीटा इधर लग रहा है. लेकिन अब F ग्रेटर देन mg sin थीटा हो गया, फ्रिक्शन इधर आ गया. So now we have F is equal to F plus mg sin theta. Basically, I'm trying to say that F minus mg sin theta is equal to F. And this quantity is nothing but F applied. अब अगर मैं F को और इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं ये F को और इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? तो ये भी इंक्रीज करेगा. रुको ना भाई अनीश. अगर ये मैं F को और इंक्रीज करूंगा तो ये और इंक्रीज करेगा. लेकिन इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू, सो व्हेन F becomes F max, then we will have F is equal to mu n plus mg sin theta, and n is still equal to mg cos theta. So F max is equal to mu mg cosine theta plus mg
इन दोनों वैल्यूज के बीच में अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा। अगर एफ मिनिमम से कम फोर्स अप्लाई किया तो ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा। और फाइनली शौनक, अगर एफ और अनीश, अगर एफ मैक्सिमम से ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा? अगर एफ मैक्सिमम से ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा? नाउ इट विल मूव अप। अब ऊपर जाएगा, अब उसको ऊपर भेज दो भाई। If you want to look at this from a microscopic perspective, if you want to look at it from a microscopic perspective, तो जो पीक्स एंड वैलीज हैं वो ऐसे हो गई है, टूटने वाली है बस। इंक्लाइंड प्लेन पे जो पीक्स एंड वैलीज हैं वो ऐसे हो गई। और जब मैंने F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा फोर्स लगा दिया तो पीक्स एंड वैल्यूज नॉर्मल हो गए, बिल्कुल नॉर्मल जैसे फ्लैट सरफेस पे हो। लेकिन अगर मैं F को एम जी साइन थीटा से ज्यादा करूंगा तो पीक्स एंड वैल्यूज उधर की तरफ टिल्ट हो जाएगी। So here the block has a tendency to go down. Here the block is आराम से बैठा हुआ है. Here the block has a tendency to go up. Okay, right? टायर कहाँ से आगे आ रहे हैं? अभी टायर मत लेके आ रहे, टायर में आते हैं, विल कम टू टायर आराम से। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस। अभी आ रहा है समझ में रेंज ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या हुआ? सो द रेंज ऑफ फोर्सेस will be F minimum is equal to ये वैल्यू mg sin theta minus mu mg cos theta। F is equal to F max पे ये हो गया, और अब इससे ज्यादा फोर्स लगाया तो यहां से टूट जाए। तो जहां भी हमें एम्बिगुअस वैल्यू ऑफ एफ अप्लाइड आएगा, जैसे हमें उन 4 क्वेश्चंस में आया जो हमने कल डिस्कस किए, जहां भी हमें एम्बिगुअस वैल्यू ऑफ एफ अप्लाइड आएगा वहां पे रेंज ऑफ फोर्सेस का स्कोप आ जाता है। अगर मेरे को फोर्सेस की, सारी फोर्सेस की वैल्यू बता दी जाए तो एम्बिग्यूटी चली जाएगी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, तब कोई रेंज वेंज कुछ नहीं आएगी, तब वही एक फोर्स आएगी। लेकिन अगर एम्बिगुअस है एफ अप्लाइड क्या होगा, कौन सा फोर्स बड़ा है मेरे को नहीं मालूम, then there is a possibility, definite possibility that you will end up talking about a range of forces. Okay? हाँ बोलो। सर जो आपने सेकंड और थर्ड फिगर बनाया है, जब भी एफ इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा है तो उसके बीच का कोई केस होगा, राइट? एक मिनट रुको, ये वाला ना? हाँ हाँ सर, जब भी एफ इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा, तो जो आपने हाँ अगले पेज पे माइक्रोस्कोपिक फिगर बनाया था हाँ उसके सेकंड और थर्ड फिगर के बीच का कुछ रहेगा ना? हाँ बिल्कुल रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। absolutely yes. So this is F is equal to 0,
दिस इज f इज इक्वल टू f मैक्स, और यहाँ पे एक वेरिएशन हो रहा है। तो जो पीक्स एंड वैलीज हैं इंक्लाइंड प्लेन की, वो पहले नीचे की तरफ टेढ़ी हुई थी, नॉर्मल हो गई, ऊपर की तरफ टेढ़ी हो गई, क्योंकि मैं फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहा हूँ। राइट, चलो, सो आई थिंक आई विल एंड हियर. What would be for all the remaining three questions? थ्री नहीं, कितना, सॉरी, आखिरी तीन का डिस्कशन हो रहा है ना। जो पहले पेज पे तीन मैंने दिया था, उसमें जो थर्ड वाला था उसके बारे में वी हैव ऑलरेडी डन, वो जो टेंशन वाला हमने कर लिया। सो हियर आल्सो फाइंड द रेंज ऑफ एफ so that block is stationary, and here also okay. So you should be able to do it very easily. जहाँ पे वर्ड रेंज आ गया वहाँ पे एक बार फ्रिक्शन को ऊपर करना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 0, और एक बार इसको जो है नीचे कर देना और मैक्सिमम कर देना, एक्सेलरेशन 0 कर देना। ठीक है, आई विल स्टॉप हियर, मैं थक गया। अब नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाते हैं इसको। ओके, कोई डाउट है अभी भी किसी को? प्लीज टेल मी। सबको क्लियर है ये? हाँ, नोट्स अभी मैं भेज रहा हूँ, अभी विद इन 10 मिनट्स में भेज रहा हूँ, कल का भी आज का भी, विद इन 10 मिनट्स। चलो, ओके, फिर बाय बाय। ये लास्ट क्लास है कि इसके बाद भी क्लास? नोट्स तो मिक्स होंगे, क्या मतलब है मिक्स मत करना? पिछले क्लास के और आज के क्लास के नोट्स में अभी 10 मिनट में भेज दूंगा। ये लास्ट क्लास है, मैं एंड करूं या अभी और कोई क्लास है? 8 तो बज ही गया है। ओके, ठीक है, चलो फिर बाय बाय, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।